Record this. So here we go. Yeah. Fine. Okay. Arrays. We did have a discussion of arrays and generic. Frankly, now you have an idea what arrays basically are. How would we distinguish between arrays and variables? I did tell you initially. Why is there a need to have arrays? What मैंने initially आपको बताया था कि I started the story from the square bracket. You can recall. Why do we use the square brackets? O levels हमें बात पढ़ रही है. Why do we use this, the brackets, the brackets, वो normal brackets कहते हैं, function वाले brackets. You know what I'm saying, right? उसको आसो. ये देखो ना. 1, 2, 3. So why do we use this? Subroutines, functions. Why do we use this? And script. Why do we use this? Arrays, databases. Come back to access. OLR में वापस आओ. जब field declare करते थे किसमें करते थे? Access में. इसके अंदर करते थे. इसके अंदर तो नहीं करते था. मगर अगर हम int का function use करते थे, we always use this to declare everything in int and the field in this. So what I'm trying to say is that whenever we have to declare an array basically is a kind of a database. Now what do I mean by that? There are two ways in that you can store data while you're writing a code. One is that you can use a text file, which inshallah very soon will come towards it. Okay, we can store the data in a text file in a programming language, with a txt file or a .NET file. We can write, we can delete, we can append, whatever we can. And the other way is that in a runtime program where we do not want to store the data permanently, we can use an array. मतलब ये कि अभी मैं program use कर रहा हूँ, I don't want to store data permanently, so that when I turn the computer again or I come back, my data is there existing over there. Arrays में जो data store होता है, जो data retrieve होता है, that is volatile. It doesn't remain there for as long as it's on. मगर text file में data store करोगे, it's permanently stored. I think you got the point. कहने का मकसद सारा ये था कि arrays are just like your database. You can declare as many comma separate values in an array, and they can store your values whatever you want them to be. So this is the reason why we use arrays, and we always have an index number for arrays, which means arrays always start from 0 and they keep on going on. And if you want to retrieve a particular array, we say print names and we refer to the index number of that. And indexing always starts from 0. I think so. We know that. Yes or no? Aisha? Any problem? Fatma? Any problem? Yeah, functions. What are functions, by the way? How would we explain functions? What do functions do? They have a very good, excellent. And I think so we did discuss event handling as well. And when we discussed event handling, we talked about functions. Okay. So whenever we want to we take an input from the user and we want to compare that particular input with certain values, those values will be defined in function. And this is one where we get the output. You get the point. So functions do have a specific job that you have to fulfill when it's properly explained. बिल्कुल सही है. ठीक है. अच्छा. Where was I? उसने क्या question पूछा था या no. Okay. Right. So arrays हैं. These are just 1D arrays. We will be talking about 2D arrays as well in the future. अभी इंशाल्लाह जल्दी हम बात करेंगे 2D arrays की. These are just 1D arrays. What do I mean by 2D arrays? Huh? Very good. When you have to compare data this way and this way as well.
Right now, we're not doing that. We're just comparing data this way. That's it. When you have one like Dell, Acer, name of the laptops, name of the countries in the list goes just horizontally. But at times you don't want to go that way. You want to discuss both. You want to discuss it this way horizontally and vertically both. Over there, two-dimensional arrays will be used. Just talking about it so that we know what is in our plan, right? So, by the way, I'm not discussing how to write on the pseudocode of 2D array right now. We will be discussing. So again, I'm just not discussing it in a lot of detail. That if we have arrays, we also have text file. If you want to open read file from a separate text, my file dot read line this and close the file. What I mean to say is, you can have a text file. You can read the data from a text file. You can delete the data from text file. You can append the data from text file. Yes, we will discuss it. Right? Let's go towards the paper. Right. आप सीएस भी पढ़ लिया करो। मैं सोच रही हूँ। है ना? Yes. Okay, now let's. तो वैसे मैं रख ही लेती हूँ आपको बुरा के। Right, let's do this one. So this is our paper 2. Yeah, I know, really fast for paper 2, but जो part हम कर रहे हैं हम साथ से पेपर कर लेते हैं, ठीक है? मैं आपको होमवर्क एक और पेपर दूंगा, आपने वो भी करना है, इनिशिएट में, जितना हम कर सकते हैं। So this is your paper 2, and it starts this way. Now you always get is an appendix, or over here you can see over here is we have this. They always tell you this. That's a very good point. But I would prefer कि आपको वैसे पता होना चाहिए. What does mid mean? They will always give you this built-in function. So if I use, for example, mid this 2, 3, it means it will go to the second, third, and fourth को extract कर लेगा. I think so. We've talked about it before as well. Not made हमने substring की बात की है, बात वही है ना, वो language में है, ये pseudocode की बात है. So यहाँ mid ने use किया word, not substring because that is specific. Okay, right? Then we have left. So if I use left this 3, it means obviously to extract this. So whenever you have to do splitting string thingy in pseudocode, you can use the mid, right, and left. Perfectly fine. Okay. Then you have the right, this as well. Okay. You have the ASCII, for example, you want to find the ASCII code for W. It's 87, so you can write ASCII W. वैसे Excel में भी available है, okay, codes and ASCII codes. 64 का rate of sign होता है, 65 का A होता है, so on and so forth. I think so. We have talked about ASCII codes. Yes, right. Length, not len, please. Len को भी marks मिलेगा, पूरा length लिखना पड़ेगा आपको. So the length of this is 10 because spaces are characters. Always remember that. Spaces are characters. So if you obviously write over here is this concatenation, you can even use plus. It will be right. A plus भी use कर सकते हो, या ampersand का sign use कर सकते हो. This is the ampersand, right? AMPRSAND. So you can use the ampersand sign as well. It joins them together. So this will always be there. Okay, but I think so. So it's the same in every paper. No difference. It's according to the paper. Okay. So there's a lot of help provided by the examiner in P2 finance. Yes, beta. How many marks? 75. The items in a table below are individual statements in a generic programming language. Show what type of programming construct each statement represents. Complete the table by putting a tick. So, 6 marks. Wow. You're going to help me. So, very good. Very good. Very good. Very good. सोचो क्या है?
Selection. इटरेशन ही है, सिलेक्शन क्यों है? So you can enter दिया. हाँ, while का था ना, while this is this, yes or no, right? Else, हाँ, selection. नहीं, ये selection भी है और ये assignment भी है, ये दोनों है. Shouldn't part 3 be selection because it's saying कि selected in कौन सा? part 3. नहीं बेटा, assignment है. But aren't they saying कि इसके अंदर से ये 3 select करें middle में से? No. वो selection की बात नहीं है. Lisa, can you explain that point? मैंने उसमें questions ऐसे होते हैं कि they're always different. They're always very different. But she's always right. She's always right. You know, you should go into actuarial sciences. You know what actuarial sciences? You should pursue that. I'm still on serious note. Actuarial sciences requires a lot of data science and all that. A lot of maths. If you're good in maths, analytical engineering होती है उसमें. It has a lot of scope, frankly speaking. Electrical engineering. I'll explain you sometime else कि इसका scope बहुत ज़्यादा है. Actuarial sciences. Anyway, मैं फिर कांस्टेंट नहीं कर रहा फिर कांस्टेंट माइंड के साइंस को कांस्टेंट कर. But do your research on actuarial sciences, all of you. It's a very, very amazing field. Okay, if you want to pursue that. Not a lot of people in this field, and there's a lot of demand growing in for actuarial sciences. Okay, बात कहाँ शुरू कहाँ पे करते हैं? Okay, state the purpose for each statement in the table. Do not use mathematical symbols for this. The statement. So we have to. हम वैसे discuss करते हैं इसका purpose क्या था? Yeah, we were assigning the value of 65 to my score. What was the purpose of 0.92? To repeat the Yes. value. Yes, from 0 to 99. Okay, yes. What was the purpose of line number 3? Please कुछ गौर से देखो फिर जवाब देना इसका. From my array from the array's position Is assigned to an array. Yes. 3. You extracted the third and the fourth of the string value and you assigned it to an array, my array, at third location. Am I right or wrong? How third and fourth? 3, 2. What does 3, 2 mean? Third and fourth को मैं extract कर रहा हूँ और उसको मैं assign कर रहा हूँ my array को. Yes or no? But you have to explain this. You just simply can't say that my array has been assigned mid. No, you need to explain that mid is extracting and then it's assigning. To be specific, what you're saying. Get the point? What do we have in fourth? Pretty simple. Yeah, selection. If the score is greater than It's simply selection. 7. Yeah. Fifth, it's the AND statement for the while used wherever. Okay. And 6. Why would 6 occur? 6 का मकसद क्या है? None of the conditions are met. If an error occurs while loop is the हाँ. Yes. Else message is equals to error. selection is फिर else इसके साथ यूज नहीं होता हाँ. फिर इसके साथ नहीं होता है होता है मगर देखो ना वो हमारा मकसद नहीं है. हमने सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि इस स्टेटमेंट का मकसद क्या है. देखो. State the purpose of each statement. That's it. आपने इसका purpose बताना है कि इस statement में क्या होगा. Error जो एक output string है वो assign हो रही है declared message को. You get the point? We don't have to explain कि ये उससे पहले क्या होगा. हमारी purpose नहीं है. Remain in that specific question और उसका जवाब दिया करो. ज़्यादा elaborate करोगे तो marks lose होने के chances होते हैं. हाँ. When you have 6 marks question and you have to do it, उस बात अलग है. मगर यहाँ over smart होने का फायदा नहीं होता. You tend to lose marks. You get the point? Right. ठीक है? So
दिस 6 मार्क्स का ये हो गया और आपका 6 मार्क्स का ये हो गया. आई शुड हैव नॉट, ये मैंने सॉल्व किया और सेव था. आई शुड हैव नॉट फॉरगॉट. एनीवे, डू यू नो व्हाट, tell me, do you know the answer of it? When is it right what I've written? Please have a look at it. Any problem? Evaluate the following expressions. When my string has a value, adaptive maintenance. So if I use D, should be joined with right of my string. At maintenance पे जाओ और maintenance के right पे जाके 4 characters निकालो right से, तो क्या आएगा? You will get is A and C, E. और इसके अंदर D join कर दोगे तो dance आ जाएगा. Yes or no? And then we have left right. So actually right is E C A. हाँ? The right से हमने extract करना हाँ. है. अब Why isn't it E C A N? किसकी बात कर रही हो? 10 की. नहीं सिर्फ Right my string क्या बेटा? मेंटेनेंस राइट से ना, राइट से 4 निकाले है ना, राइट से 4 जब करेंगे तो 4 राइट से होगा ना. No, she's saying about 0. Won't we start with 0? No. ये अरे तो नहीं है ना, ये तो स्ट्रिंग है. आप अरे से कंफ्यूज कर रहे हो इसको. Sir, but the substring नहीं होता 0 से ही start होता है. नहीं. अच्छा. वेरी गुड क्वेश्चन. वेरी मैं बताना भूल गया इस बात को. वो होता है वो स्पेसिफिक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर पाइथन की बात कर रहे हो और अगर जावा की बात कर रहे हो उसमें 0 मैंने कहा था. मगर जनरली जब सूडो कोड की हम बात करते हैं वहाँ 0 से नहीं हम करते. इट्स 1. प्लीज ये बात ध्यान में रखना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो अगर जब आपको एग्जामिनर कहेगा कि राइट दिस इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तब हम 0 कंसीडर करें. इसमें was this your question? While we were doing Java and while we were discussing substring, I emphasized on the fact that the first character that we have initializes with 0, then 1, and 2, and 3. But today I am changing my statement. I am saying कि नहीं A तो आ रहा है 1 से और 0 से नहीं, क्योंकि ये सूडो कोड बात हो रही है और सूडो कोड में 1 से ही होता है. जी, सूडो कोड में ऐसा होता है, लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता. हाँ, बेटा से पास्कल में 1 से होता है. और लेफ्ट क्यों ऐसा होगा? यस फातिमा, यू डोंट टॉक मच एंड फ्रैंकली मैंने काम करना है, मैंने आप लोगों को बुलवाना शुरू करना है. यू हैव टू टॉक. ये जब हमारा P2 50-60% हो जाएगा ना, आई विल आस्क यू टू गिव प्रेजेंटेशंस. जब इतना पहुंच जाएंगे, आई वांट यू टू ड्राइव द कॉन्फिडेंस. आई नो यू नो सब. देखो सब्जेक्ट आना अलग बात है, मगर आई वांट यू टू ड्राइव दैट. अच्छा फातिमा बेटा बताओ मुझे ये 10 क्यों आ रहा है? Before we saw things of an actuarial science thing. अच्छा, आप कह रही हो कि राइट माई स्ट्रिंग 7, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, तो टेनेंस आ गया ना, टेनेंस आ गया. और टेनेंस को अगर लेफ्ट से देखेंगे तो 10 आ जाएगा. 3 बिल्कुल सही. So can I go down before you think of? एक बार क्या कहते हैं, राइट मींस कि जो राइट प्लस का वर्ड है इन द स्ट्रिंग. जी बेटा पहले तो आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना. कि हाउ डू वी नो कि फर्स्ट वर्ड की बात हो रही है, सेकंड वर्ड की बात हो रही है इन द वैल्यू. मैंने कहा था ना, शेवन करना. देखो इफ यू टॉक अबाउट राइट माई स्ट्रिंग 7 तो क्या हो रहा है? ये नहीं आ रहा EEN, ये आ रहा है ना. सर ये ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे पता है कि हमने अडैप्टिव यूज करना है या मेंटेनेंस वर्ड. बेटा adaptive maintenance is one word. It's just coming down doesn't mean separate word. आपके डबल कोट्स किस पे आ रहे हैं? Where are your double quotes? Around what? The entire both words. So it's one sentence. 2 words are sentences as well. Yes. Get the point. Clear or not? I'll stop here क्योंकि अगला question I'll do very much. Okay. By the way, why don't you try it? मैं आपको होमवर्क नहीं काम दूँ. जो question number 2 है,
प्लीज रीड इट थॉरली एंड ये तो खैर हो जाएंगे। इसका एल्गोरिथम है ना, आपने रफली बस लिखना है। ओके, कैन यू ट्राई इट, जस्ट गिव इट अ शॉट। बल्कि काम करना है इसका, आई वांट इसका फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड दोनों, ठीक है। दिस इज अगेन, आई रिपीट, दिस इज योर May 2016 P2। इसका मुझे फ्लो चार्ट और सूडो कोड दोनों एकदम देखना है, ठीक हो गया। एंड वंस यू डन, आपने मुझे व्हाट्सएप करना। क्वेश्चन 3 था, 2 था, क्वेश्चन 2 था। कंफ्यूजन होगी, अगली क्लास में आई विल स्टार्ट विद दिस एंड आई विल एक्सप्लेन इट, फिर हम पाइथन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग कर लोगे इंशाल्लाह, नहीं तो विल डिस्कस इट। और मैं हर बार यूज करूंगा, टॉपिक डिस्कस करने के बाद साथ में पेपर्स भी कर देंगे डिस्कस, होता आपको पता है कि वो रेडी हो जाए कि हाउ इज इट गोइंग। ऐसा अच्छा, ऑनलाइन कौन कौन ऐसा कैंडिडेट अटेंडेंस मैं आपको ऑनलाइन करता हूँ। ऑनलाइन है, हाँ ऑनलाइन कोई भी नहीं है, आई बोल रहा है, ठीक है उनके लिए।